होता है कि फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन इन विच वी यूज अ फंक्शन कीवर्ड, जिसमें हम फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, वी यूज अ फंक्शन कीवर्ड। और दूसरे टाइप का फंक्शन होता है एक्सप्रेशन फंक्शन, दैट या फिर कोई कोई उसे या एल्स यू कैन आल्सो कॉल इट एज अ एक्सप्रेशन फंक्शन या फिर फंक्शन एक्सप्रेशन, आप ये भी बोल सकते हैं, जिसमें हम एक फंक्शन की डेफिनेशन एक वेरिएबल को असाइन करते हैं और वो वेरिएबल फंक्शन जैसा बिहेव करना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन एक्सप्रेशन फंक्शन या फिर फंक्शन एक्सप्रेशन। अभी हम लर्न करेंगे दैट इज अ कॉल बैक फंक्शन, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंड विच वी यूज कॉमनली। सो लेट्स लर्न दैट वन। फिर उसके बाद हम एरो फंक्शन देखेंगे। एरो फंक्शन को मैं और ज्यादा थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा थोड़ा आगे चल के, बिकॉज ज्यादा आपको उसमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि उसका एडवांटेज क्या है। बट जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टॉपिक्स पे जाएंगे, as soon as we will shift on the object oriented topic, you will get a very pure ideology that why it is used, वो क्यों यूज होता है, और रिएक्ट में एरो फंक्शन सबसे ज्यादा क्यों यूज होते हैं, उसका भी आपको आंसर यहाँ पे मिल जाए। फिर उसके बाद हम IIFE फंक्शन देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन। सो एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन इन फंक्शन डेफिनेशन और इन एक्सप्रेशन फंक्शन? कोई है जिसे कोई डाउट है यहाँ पे? Yes, anyone is there who is having doubt? No, sir. Okay. So now let's see guys what exactly the callback function is. Callback function क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। Okay? जैसे मान लेते हैं कि take an example. Take an example कि मैंने एक function create किया. Let's say I have created one function. Okay? So I will say that there is a function. Let's create a function. Like say I want to create a division function. I want to create a division function. तो इस डिवीजन फंक्शन में हम दो पैरामीटर पास करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल डिफाइन करूंगा, लाइक से var1 and then I will use variable 2, that's a var2. So I will use var1 and var2 and then just we will print them. तो इसे हम प्रिंट कर दें, like say var1 comma var2 and then I will use a div. just मैं उसे कॉल करूंगा, I will just call it, very simple call, and let's run this with live server. तो हम इसे लाइव सर्वर के साथ रन कर देंगे। So it will be get open with my live server. Just I will bring it on my screen and let's run this page. इस पेज को हम यहाँ पे रन करें and let's go with the inspect section also, because वहीं पे हम चीजों को चेक कर सकते हैं। Okay, so we can test the things. So इसे मैं रिफ्रेश करूंगा। Just I will refresh it. So you will see that it will just yeah, it will give me 2 undefined. यहाँ पे मुझे 2 undefined मिलेंगे on line number 50. Okay, so why? Because मैंने पैरामीटर पास नहीं किए, so I will pass the parameter like say 10, 20. Now let's say that I'm having these 2 variables और मुझे उनका डिवीजन करना है, so I want to divide them. So अभी इसका आंसर क्या आएगा? If I use like say a let key, just I will use let keyword. तो इसका आंसर क्या आएगा guys? If I just say result, what will be its answer? If I say var1 divided by var2, इसका आंसर क्या आएगा? Yes, who can tell me? It's a simple. What will be the answer? Yes, anyone? Try to speak. It's important. Sir, 0.5. Exactly, it will be 0.5, right? बोलने की कोशिश कीजिए। देखिए, in interview, speaking is very important. If you don't speak, then obviously you will have a trouble. And here is a training program. ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यहाँ पे अपनी जितनी भी गलतियां होती है वो सुधार सकती है, लेकिन इंटरव्यू में गलतियां नहीं कर सकते आप। दैट इज अ ट्रू फैक्ट। ओके, सो बोलने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू स्पीक द थिंग्स। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, सो यू विल सी दैट आई एम हैविंग अ डिव ओवर हियर। मेरे पास यहाँ पे डिव है, मैंने उसे डिवाइड किया एंड आई विल हैव दिस रिजल्ट। अगर मान लेते हैं कि मुझे ये जो पर्टिकुलर डेटा है या फिर ये जो पर्टिकुलर आउटपुट है, इसका जो भी रिजल्ट आएगा, आई जस्ट वांट टू यूज इट इन द आउटर वर्ल्ड, मुझे आउटर वर्ल्ड में उसका यूज करना है। तो हम कैसे यूज कर सकते हैं?
वी कैन यूज अ रिटर्न कीवर्ड, हम रिटर्न कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। और रिटर्न में क्या होगा, ये जो वैल्यू रहेगी जब ये फंक्शन रन होगा तो वो रिटर्न हो जाएगी, एंड रिटर्न वैल्यू कैन बी कलेक्टेड इन अ वेरिएबल। तो इसको हम यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, एंड देन आई कैन यूज दैट। ओके, आई कैन यूज दैट वन, and you will see still I will get output 0.5, but that will be on line number 54. ये line number 54 पे मुझे output मिल जाएगा। Okay, but here is a small problem. The problem is that, like, if I'm creating a function, okay, and then I'm returning this variable, the value is stored in the outer world. अभी ये जो result है, it's a global variable. ये global variable होता है। So what is the definition of global variable? कौन बता सकता है मुझे? What is the definition of global variable? It Sir, can I'm be not accessible. sure. access outside the function. It's anywhere inside the function. Exactly. So it is written outside the function. ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जो हम आउटसाइड द फंक्शन रिटर्न करते हैं या फिर यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं। सो दिस रिजल्ट इज अवेलेबल इन थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। मतलब जो भी आपकी पेज है या फिर जो भी आपका प्रोजेक्ट है, इन दैट एंटायर प्रोजेक्ट इट इज अवेलेबल, इट्स ग्लोबली डिक्लेयर। तो इस पूरे के पूरे पेज पे main.js पे ये अवेलेबल। दिस इज समथिंग विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस जावास्क्रिप्ट में, बिकॉज राइटिंग अ ग्लोबल वेरिएबल, देखिए जावास्क्रिप्ट एक ब्राउजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ब्राउजर में आपके वेरिएबल अगर ज्यादा हो जाए तो मेमोरी बढ़ जाती है। दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट गुड प्रैक्टिस। तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया है, जावास्क्रिप्ट हैव क्रिएटेड सच अ काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी इन व्हिच यू कैन क्रिएट अ वेरिएबल इन अ स्कोप एंड यू कैन डिस्ट्रॉय दैट वेरिएबल। आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ओके, वन ऑफ द वे, अभी ये एक वे है, वन ऑफ द वे इज बाय यूजिंग अ फंक्शन डेफिनेशन। तो जैसे मान लेते कि मैंने यहाँ पे ऊपर एक फंक्शन लिखा, like I just written a function like say print div result। मैंने एक फंक्शन लिखा है और उस फंक्शन में मैं ये रिजल्ट पास करूंगा, सो आई विल गेट दिस रिजल्ट, और फिर मैं उस रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करूंगा console.log, and then I will say result। now you will say that दीपक फिर हमने यहाँ पे क्यों नहीं किया डिवीजन क्या था, अगर फंक्शन के अंदर ही करना। द आंसर इज दैट गाइस, क्या हमें पता नहीं कि डिवीजन के बाद हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने। we don't know that after division what we want to perform। so division क्या करेगा, it's a we need to create a function जो बार बार यूज होगा और जो रिटर्न भी देगा। so that's why we have used the division separately, और प्रिंट करने के लिए हमने सेपरेट फंक्शन क्रिएट किया। so अभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो फंक्शन है ये मैं इसके अंदर भी लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। इससे होगा क्या, you will see that कि मुझे वही डेटा प्रिंट होता दिखाई देगा। see I will get the same data, but the problem is that कि आगे चल के अगर ये फंक्शन चेंज हो गया तो फिर हमें प्रॉब्लम आ सकती है, and it will give us an error। तो हमें रेफरेंस का एरर मिलेगा। मैंने बताया था आपको कि हमारे जावास्क्रिप्ट में अलग अलग टाइप के एरर्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज अ रेफरेंस एरर। रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि उसमें मेमोरी नहीं है, इट्स नॉट हैविंग अ मेमोरी एलोकेशन। ओके, तो ये यही बोल रहा है दैट प्रिंट मैंने स्पेल गलत कर दी, प्रिंट वेरिएबल just I will say print result, that's it। so ये मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ print result। so it will say that कि आप जो print result यूज कर रहे हैं it is not defined, और ये नॉर्मली होता है। तो जावास्क्रिप्ट ने एक सॉल्यूशन ऐसे निकाला है कि जो आप फंक्शन कॉल कर रहे हो उसके अंदर आप एक डेफिनेशन पास कर सकते हो। यू कैन पास अ डेफिनेशन, जैसे कि ये डेफिनेशन मैं पास कर दूं। ओके, और जैसे ही मैंने ये डेफिनेशन पास की, इट्स अ थर्ड पैरामीटर ऑफ माय डिवीजन फंक्शन। तो यहाँ पे मैं उसे कॉल कर सकता हूँ, और एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं हम जिसे कहते हैं कॉल बैक। तो कॉल बैक मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जैसे ही डिवीजन फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा एक कॉल बैक दीजिए। ओके, तो कॉल बैक देने के बाद वो जो फंक्शन रहेगा वो रन होगा। कौन सा, जो हम रन टाइम पास कर रहे हैं। इट्स अ फंक्शन डेफिनेशन, इट्स अ फंक्शन डेफिनेशन। इसको अगर हमने प्रिंट भी करके देखा, इफ आई ट्राई टू प्रिंट इट, यू विल सी दैट कि ये मुझे एक्चुअल डेफिनेशन देगा। इट विल गिव मी एक्चुअल डेफिनेशन। तो अगर ये मैं एक फंक्शन है तो हम उसे रन भी कर सकते हैं, वी कैन रन इट। सो व्हाट वी कैन डू, सिंपली
जस्ट आई विल से इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी एक्सटर्नल फंक्शन नेम, मैं ये वाला फंक्शन नेम यूज करूँ। अभी आगे चल के इसका नाम प्रिंट 1 2 3 भी हो गया, तो हमें सिर्फ एक ही जगह पे चेंज करना है, फंक्शन कॉल पे, जो हम कर सकते हैं, बिकॉज ये डेफिनेशन पे अभी इसकी कोई डिपेंडेंसी है नहीं। यहाँ पे आप कुछ भी दीजिए, ये कॉल बैक के नाम से ही वो यूज करेगा। आप यहाँ पे So, कुछ भी पास कीजिए, इट विल वर्क विद अ कॉल बैक ओनली। so is a callback is a reserved word? सॉरी, नो नो नो, Callback इट is इज a नॉट reserved. रिजल्ट, नो नो नो, इट इज नॉट रिजल्ट। यहाँ पे इवन मैंने मेरा नाम भी लिखा, लाइक से दीपक कुमार, स्टिल यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रन हो जाएगा। ओके, बट हम कॉल बैक क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड वर्ड है, रिजर्व नहीं। स्टैंडर्ड वर्ड मतलब क्या, कि आप कहीं पे भी वो जैसे इंटरनेट पे अगर आप सर्च कर रहे हो, तो आपको जहां पे भी कॉल बैक वर्ड दिखेगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि फंक्शन कॉल के अंदर एक डेफिनेशन रहेगी। सो दैट इज व्हाट द आइडेंटिफिकेशन। तो उसकी वजह से यहाँ पे कॉल बैक यूज करते हैं। टेक्निकली वी यूज अ कॉल बैक वर्ड, इट इज नॉट अ रिजर्व वर्ड, ये याद रखिए, इट इज नॉट अ रिजर्व वर्ड। ओके, एंड देन वी कैन यूज इट। अभी मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे मैंने प्रिंट रिजल्ट 1 2 3 ये कितनी बार यूज किया है, हाउ मेनी टाइम आई एम यूजिंग इट? 2 times. ये 2 times. नहीं, हमने 2 times. नहीं 2 टाइम नहीं यूज किया है, हमने एक ही जगह पे उसका यूज किया, यहाँ पे यूज किया है। ओके, वो तो कंट्रोल है, इट्स अ कंट्रोल। यहाँ पे चले जाने के बाद उसका नाम ही नहीं रहेगा ना, राइट और रॉन्ग, तो हमें उसे एक ही जगह पे यूज कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस फंक्शन लाइक दिस, व्हाट वी कैन डू, हम इस फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और फिर हमें उसका नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो नाम निकाल देंगे हम। सो अभी आपको ये जो दिख रहा है, ये हुआ आपका एक कॉल बैक फंक्शन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉल बैक फंक्शन? अ फंक्शन, a function definition, a function definition, a function definition written in a function call. Okay, a function definition written in a function call is called as a callback function. Written in a function call is called as a callback function. Okay, तो किसी भी फंक्शन कॉल के अंदर अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो, तो उसे हम कॉलबैक फंक्शन कहते हैं। और यहाँ पे जिस पर्टिकुलर फंक्शन के कॉल के अंदर हम वो डेफिनेशन लिख रहे हैं, उसे हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो div है, इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन, इट्स अ हायर ऑर्डर फंक्शन। ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन। ये कब हायर ऑर्डर फंक्शन रहेगा? जब उसके कॉल के अंदर एक डेफिनेशन रहेगी। और कॉलबैक सबसे पॉपुलर है इन द जावास्क्रिप्ट, कॉलबैक इज द मोस्ट पॉपुलर वन। अभी इसका एडवांटेज क्या है वो देखिए, ये जो रिजल्ट रहेगा ये लोकल स्कोप में है, ये आप बाहर यूज नहीं कर सकते, तो ये स्कोप ओरिएंटेड हो गया। दूसरी चीज ये है कि हम एक ऐसा फंक्शन लिख रहे हैं जो कॉल, जब डिव कॉल होगा तभी वो उसको मेमोरी एलोकेट होगी। देखिए एक बढ़िया आउटपुट, तो जब ये डिव कॉल होगा तभी उसको वो मेमोरी एलोकेट होगी और तभी वो एग्जीक्यूट होगा। दैट इज व्हाट द लॉजिक ऑफ कॉल बैक इज। तो ये रन टाइम ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं सारे के सारे, और जो चीजें रन टाइम ऑपरेट होती है ऑब्वियसली उसमें मेमोरी डी एलोकेशन हो जाता है। तो अगर मेमोरी डी एलोकेशन हो गई तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो जब आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिटर्न यू मस्ट यूज कॉल बैक। इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिटर्न यू मस्ट यूज कॉल बैक, एंड विच इज द सजेस्टेड वन इन जावास्क्रिप्ट। So a function definition written in a function call is called as a callback function. इसे inline function भी कहते हैं। inline मतलब क्या, कि एक फंक्शन कॉल के अंदर एक डेफिनेशन लिखना, उसे इनलाइन कहते हैं। ओके, तो ये एनोनिमस फंक्शन ही होता है, बट हम ये क्या करते हैं, वी डोंट असाइन इट टू एज एन एक्सप्रेशन। हम एक्सप्रेशन जैसा उसे असाइन नहीं करते, वी असाइन इट एज अ इनलाइन फंक्शन। तो उस वजह से इसे कॉलबैक फंक्शन या फिर इनलाइन फंक्शन कहते हैं। ओके, यस, सो टिल हियर इट्स क्लियर। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? अभी कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा आता है कैंडिडेट का कि कितने कॉलबैक आप यूज कर सकते हैं। यू कैन पास अनलिमिटेड कॉलबैक। एक डेफिनेशन के बाद आप दूसरी पास करते हैं, दूसरे के बाद तीसरी भी पास कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं।
सिर्फ जितनी डेफिनेशन आप पास करोगे, जैसे मैं यहाँ पे और एक डेफिनेशन पास कर रहा हूँ, सो ओके, तो यहाँ पे आपको और एक कॉल बैक लिखना पड़ेगा, बट उसका नाम थोड़ा चेंज होना चाहिए। सो टू वेरिएबल कांट बी सेम, तो ये रहेगा कॉल बैक 1। बट कॉमनली वी यूज ओनली 1 कॉल बैक। कभी कभी होता है कि 2 कॉल बैक यूज होते हैं, बट वो बहुत ही रेयर केस है, और वो आपको नोड जेएस में दिखेगा कि कभी कभी 2 कॉल बैक यूज होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ओके, yeah, so till here it's clear. Any question, any query? तो यहाँ पे ड्यू करके 2 फंक्शन हमने लिखे हैं, तो ये सेम नहीं हो रहा है क्या? रिपीटिव कोड नहीं हो रहा है क्या? कहाँ पे? लाइन नंबर 54 से लेके 57 तक ये कोड जो है, सेम वैसे ही कोड 58 से लेके 60 तक है। नहीं ना, कहाँ पे? ये तो डेफिनेशन, ये तो कॉल हो रहा है ना। ओके देखिए, ओके, ये कॉल है और ये एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन है। ओके, हाँ, तो उसके गॉट। अंदर हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। ये जो डिव है, इसका लॉजिक और ये वाला लॉजिक अलग है। क्यों? बिकॉज डिवीजन होने के बाद हमें क्या करना है वो हम डिसाइड करेंगे। ओके, आफ्टर द डिवीजन व्हाट वी नीड टू परफॉर्म, वो हम डिसाइड करेंगे। सो नाउ जो अभी नए वाली बैच वाले कैंडिडेट है, आपका डॉम ऑपरेशन हुआ है क्या? यस गाइस, हैव यू कंप्लीटेड विथ योर डॉम? No, sir. ओके नो फाइन, सर। ओके, या बट रेस्ट बैच का हुआ है राइट? बाकी कैंडिडेट्स का हुआ है डॉम? No, sir. ओके, डॉम नहीं हुआ है। ओके, ओके फाइन, नो इश्यू। सो बेसिकली हम जब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज करके हमारे पेज के साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। वी कैन इंटरेक्ट विद द एचटीएमएल पेज by using document object model, and the same thing we are going to do with the React, but we don't rely on the document object. Okay, that's why it might be possible that it might not be taught to you. Okay, so let's move forward with it. So this is what the callback function is. तो ये एक callback function होता है। This is what the callback function is being. Okay, yes, any more question, any more query with respect to this? सर इसमें फंक्शन का नाम अगर चेंज होता है तो ही प्रॉब्लम होगा। अगर नेम से हम कॉल बैक का ये करते हैं। कहाँ पे बोल रहे हैं आप? 51 लाइन नंबर। हाँ, अगर ये फंक्शन नेम से अगर नीचे हम लाइन नंबर 60 में मेंशन करते हैं, तो अगर नेम ऊपर से चेंज होता है तो ही प्रॉब्लम होगा। नहीं, और एक प्रॉब्लम है ना यहाँ पे। व्हाट इज द प्रॉब्लम कि ये फंक्शन एक बार डिक्लेयर कर दिया तो ये मेमोरी में परमानेंट हो गया। तो आप Okay. अगर उसे ग्लोबलाइज अगर लिख रहे, इफ यू आर राइटिंग अ फंक्शन एज अ ग्लोबलाइज फंक्शन, तो उसको मेमोरी हमेशा रहेगी, तो उसकी मेमोरी कभी रिमूव ही नहीं होगी। हाँ, बट ये कब यूज कर सकते हैं आप? अगर मान लेते कि मेरे पास 4 फंक्शन है और चारों फंक्शन को एक ही कॉल बैक फंक्शन का लॉजिक चाहिए। ओके, मतलब यहाँ पे जो लॉजिक मैं लिख रहा हूँ वो कॉमन चाहिए। इन दैट केस यू कैन यूज दैट वन। Okay, sir. Thank you. So this is something what we have callback. Now you will ask me, Deepak, where we have seen a callbacks. Okay, तो जब हम array पे काम कर रहे थे, whenever we were working with the array functionalities, okay, so array की कुछ built-in functions होते हैं, okay, जिनमें हम इनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे array को रीड करना है, I want to read an array, तो यहाँ पे हम callback define करते हैं। So let's see how it works. So let's say कि मेरे पास एक array है, and just I will say this is the number array. Okay, like I'm having a number like say 10, 20, 30, 40 and so on. Okay, and I just want to read this one. अभी हमने इसके पहले क्या देखा था? That we can use loop. कौन से loop देखे थे? Yes. For loop, for each, For do each, while. For in, for in, for off. फॉर ऑफ, for of. Yeah, for each देखा था हमने? हाँ, फॉर इन देखा था, फॉर ऑफ भी देखा था। For in देखा था और While, for do off while. देखा था, but for each नहीं देखा था, right? हमने ये वाले देखे थे। We have not seen for each. इसी चीज के लिए मैंने कहा था कि हम पहले फंक्शन देखें। तो now let's say that I just want to use a for each. For each is not a loop. It's an iterators. Okay, loop ये होते हैं. Remember, we are using keywords as a for, keyword as a while. हम for each नाम का कीवर्ड यूज करते हैं क्या?
Are we are using for each keyword? The answer is no. Even if I hit enter, तो ये क्या कहेगा? That it will be, it is actually a, क्या ये actually एक method है. It's not a loop, it's a method. ये एक iterative method है. So for each को अगर मुझे use करना है, if I want to use for each, so after the array we can use it. Without array आप उसका use नहीं कर सकते. And that is something which is the standard part. तो ये basically loop नहीं है, it's a iterator. हाँ, but किसी ने अगर आपको कहा कि iterators और loop में क्या फर्क होता है? Basically the iterators are the different methods. Iterator methods होती है, okay? जिनका use हम करते हैं. Now behind the scene ये जब हम for in और for of use करते हैं, इसके पीछे भी iterator ही होता है, जो iterate करता है, okay, चीजों को. Okay, that is what the logic is. So these methods are basically the iterator method. Iterator मतलब loop ही होता है, but वो standard keywords नहीं होते loop के. Okay. So now I will use a callback function. तो देखिए मैं एक function लिखूंगा जिसका नाम नहीं होगा, and I will write that one inside a function call. So अगर मैंने यहाँ पे होर किया, if I hoar it, it will say that you need to use callback function. See, it is saying that it's a callback fn, means callback function. This callback function will have a value as a first parameter. Second parameter will be the index, and the third parameter will be array. इसका पहला parameter एक value होगी. तो चलिए इसे एक function define करते हैं. Function without a name. Okay, you know, function call is a callback function. And then I will have a value over here. Okay. Second will be the index. Now, what is the advantage of for each? The advantage is that simultaneously you can collect an index and a value. You don't need to use any extra logic of array. So if I just try to print like say value comma index, you will see that it will be there. आप देखोगे कि ये print होगा. See, यहाँ से. So it is being printed over here, and this is something which is important. Okay, so now I'm getting the index also, now I'm getting the value also. So when we work with array methods, it's very important that you must work with this. So when I want to read the data of an array, if I want to read the data of an array, we can use the array iterator. That is a for each. Or for each आपको collect करके देगा. So this function will run again and again. ये जो iterator है again and again run होगा. अभी देखिए यहाँ पे मैंने div कॉल किया था, लेकिन वो हमने खुद क्रिएट किया था, तो callback हमने खुद लिखा. But if you don't need to write it for each, because ये उसके अंदर by default है. It's a inbuilt method of array, so you don't need to be worried about it. आप उसको directly use कर सकते हैं. Is that clear? Any question, any query clear? Yes. Any question, guys? No. Sir, loop. Excuse me, sir. So ये जो function है, ये बार-बार कॉल होगा. Okay? So जैसे कि फर्स्ट वैल्यू के लिए एक बार कॉल होगा, फिर सेकंड वैल्यू के लिए कॉल होगा, फिर थर्ड वैल्यू के लिए कॉल होगा, और फिर फोर्थ वैल्यू के लिए कॉल होगा. ये तब तक कॉल होगा जब तक आपका लूप, जब तक आपका एरे खत्म नहीं हो जाता. Until and unless you are, yeah, Siddhi, I think so your mic is on. Yes. Siddhi, can you turn it off? So ये जो particular function है, ये बार-बार execute होगा. Okay, that is the operation, या फिर ये जो mechanism है, that mechanism is pre-built or inbuilt inside the JavaScript. So you don't need to be worried about it. But remember only one thing, कि ये जो function है, ये बार-बार कॉल होता है. ये तब तक कॉल होगा जब तक आपका एरे खत्म नहीं होता. So पहली वैल्यू, first time it will be get called, again it will be get called. In that case, the second value will be there, then the third value, then the fourth value, then the fifth value, and this is how the logic is been built. Okay. Yeah. So is that clear? Yes, sir. Okay. So this is how Yes, what the sir. array methods are. This is what the array method is. So जब आप array की method use करते हैं, so हमेशा याद रखिए that array method has a callback functions. Okay, major of the array methods are having callback functions. Okay, तो चलिए फिर और कुछ methods देखते हैं.
Let's see one more method. जैसे मान लेते कि मुझे कुछ सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं. I just want to make some search operation. Okay, let's say I want to search a value as a 20. Okay, so I will say like say let value as 20. Okay, which I want to search. So I will say search value. मैं यहाँ पे इसे search value लिखूँ. And now I will use the same logic. See, I will again use like say number array dot. Yeah. So just a minute, guys. Just hold for a minute. Okay, fine. I'm so sorry, guys. Yeah. So let's resume. So now take an example that I just want to read an array. Okay, so sorry, I just want to find a value as a 20 from an array. मुझे array से value find out करनी है. So we can use a method called as a find. We can use a method called as a find. And you will see that it has a predicate. Okay, predicate means it is actually a callback function only, but it can predicate the values. Okay, it can predicate the values. So it is basically called as a predicate, but ये एक function ही होता है, एक callback function. It will also have the 3 parameter value, a index and a array. We don't use array. हम array use नहीं करते. Okay, इसमें तीसरा parameter array रहेगा, but we don't use it. Now you can see that I'm having value. Okay, so हम यहाँ पे ये check कर सकते हैं whether this value is equals to search value or not. And if it is equals to, so what we need to pass, guys? We need to set a criteria over here. हमें यहाँ पे एक criteria pass करना पड़ता है. We need to set a criteria. Depending on the criteria, it will return the value. So I will just say return it. And once it is written, we can collect that value in a variable. Like say I will say let result, search result. Okay, search result. And then I can just check the search result. Like say console.log, just I will search it. And you will see I will get a 20 on line number 77. Okay, so I'm having 77 number line. It will give me the result. And it will give me a 20 as a result. Means it is available. It's find. Okay, the value is searchable. Now tell me, guys, what will happen if the value is not available? Yes, who can tell me? Like I have written 50. It is not available. So what might be the possibility we will get? क्या possibility रहेगी? Undefined. Yeah, exactly. We will get undefined. Answer is right. So if you don't get the output, if you don't get the value, you will get undefined. Okay, you will get undefined. So what is the use of find? Find is used to find the value. Okay, find is majorly used to find a value. Okay, now you will ask me like say Deepak, it actually searching the same value and we are getting the same. तो ऐसा नहीं है. अगर मान लेते कि इसी चीज को अगर मैंने स्टूडेंट की डिटेल से अगर मैप किया, like say I will have a student details, like say student name. Okay, like say name of the student, like मैं मेरा नाम लिखूंगा. Then I will have like say the roll number of the student. Like say the roll number is like say 10. Have we taken the objects? We have taken objects like, or we have not taken the objects? Yeah, we can take object in array. Yeah. Okay, so no issue in that.
I think so that we have not taken it. So yeah. So like I will just say that the roll number is 10 over here. Just I will save this one. And now I will just use the simultaneously. I will just use the say roll numbers over here. The student details. So like my, just I will copy this object. ये मैं copy कर लूँगा and just I will paste it. And this will be like Suraj having roll number as 11. And let's save it. And I can write multiple candidate details. Okay, like say 12, 13, and then I will write some of the name like say Vinod. Okay, and then I will just say Rashmi. Okay, so like say roll number is 13. So now we can find the search. Like say मुझे roll number से find out करना है. So I will just find roll number is like say 11. So now we need to write something in this way because every iteration the value will be different. Let's print it first. That let's check that value क्या आएगी. Okay, let's check it. So you will see now we will actually get an object. So every iterator will have an object. So now if I want to find out the roll number, matching roll number, so I need to use logic something like this. So I need to use value dot, then it will show me that there is a roll number and name. I need to find out with the name. And this is the search value. And now we will get the valuable result. That is Suraj. See, I'm getting the entire result. So only I'm finding, मैं यहाँ पे value find कर रहा हूँ roll number से. I'm just searching the value with the roll number. और मुझे return में पूरा object मिल रहा है. So that is what the use of find is. Okay, that is the use of find it. But now take an example like say मेरे पास यहाँ पे ऐसे दो roll number है जो same है. I am having the same roll number. Okay, let's take an example. I am having same roll number. So now if I try to search it, you will see only one result we get. So what is the limitation of find? Find का limitation क्या है? That Uniqueness. it will find the value and only return one value. Only returns a first search value. और अगर value नहीं मिलती है, okay, and if value not found, then we get not found, we get undefined. We get undefined. Right? We get undefined. Guys, I have shared you a Git repository of this particular code. मैंने Git repository share की क्या आपको? No, sir. Okay. No, By sir. today we do that. No, sir. So before end of the session, I will just create a repository and I will share it to you guys. Okay, no worries. So that is the use of find. Okay, so find will just whenever the find will finds the value and it returns only first search value and value is not found, we get undefined in that case. हमें undefined मिलता है. उसी तरीके से अगर मान लेते लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है लाइक टेक एन एग्जांपल व्हेन आई एम सर्चिंग ऑन समथिंग ऑन गूगल. ओके, जब मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूं, ओके, इफ आई एम सर्चिंग समथिंग ऑन गूगल लाइक से HTML, you will see that I will get more than one suggestions. इसका मतलब क्या है? That there are the possibility जहां पे आपको एक से ज्यादा आउटपुट चाहिए होते हैं. Okay, you need more than one searching results. So in that case, find is not used. Okay, there is means it is having no use in that case. So what we can do? We can do one thing that I can say, just I will say search result. I will say we can use a method called as a filter. So see guys, filter and find both are used for the search operation only. Okay, so I will just say search filter result. And now if I try to print this filter result, you will see that it will provide me a list. See, इसने मुझे एक searchable list pass कर दी, a filter list. Okay, who are having the same roll number. And this is something which is very valuable. So what happens when we use filter? What happens when we use filter? Filter will find the values. Filter will filter the value. Filter the value. Okay, all which matter, all which and returns all the matchable result. Returns all the search result, search value result. Okay. But if it is not found, in that case, what might be the possibility? Yes, कौन बता सकता है? अगर मान लेते कि ये सर्च हुआ ही नहीं, तो क्या पॉसिबिलिटी है फिर क्या आउटपुट आएगा?
So do we will get undefined or any other output we will get? Empty array. Empty array, right? So we will get an empty array. Absolutely right. So यहाँ पे हमें empty array आएगा. Okay, we will get an empty array. So now this is what a find and filter comes into the picture. And the last one which we are going to see the method. बाकी जो method से you will get one that the methods will be get. ये जो method है मैं इतनी बताऊंगा. बाकी जो methods है वो आपके जो regular session से उसमें आपके cover हो जाएंगे. Okay, so we have seen filter method, find method, for each method. Now we are going to see the map and join method. ये बहुत ही important method है, दो methods. So now what is the use of join method? Anyone can tell me what is the use of join method? Yes, anyone? Those who have completed the array part. His work as a concatenation. Concatenation नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते. Concatenation अलग चीज होती है. It's a different one. Merging to a No, it is not used for merging to array. Basically, the join method is used to convert an array to string. It is basically used to convert the array to string. तो अगर मुझे array को string में convert करना है, तो हम उसका use कर सकते हैं. We can use that. Okay, if I want to convert it to the array to the string, we can use it. Okay, fine. Now the question comes over here is that कि कैसे कर सकते हैं? So it's a very simple game. Let's say I will say let string array, and then I will just use number array dot join. तो इसको अगर मैंने यहाँ पे print किया, if I just try to print this statement, if I try to print the string array, you will see that actually I will get, it will say object of object. Okay. The reason is that we are converting an object array, which is not a legal one. Okay. So that's what I will do. Just I will copy this array and I will use a number array first. So I will just say number array. This will be an object array. So let's use this object array wherever I use a number array. And let's say number array. So like I'm having a number which will start from 10, 20, 30. So now you will see that it will actually convert that. I will get a comma. तो अगर मुझे यहाँ पे अगर ये जो ज्वाइन हो रहा है ये पीसेस, इसके बीच में एक ग्लू है कोमा का, तो मुझे अगर उसे चेंज करना है तो ज्वाइन के अंदर हम जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर पास करेंगे, इट विल बी गेट ऐड विद दैट. अगर मान लेते कि मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर यूज किया तो अंडरस्कोर वैल्यूज होगी. So you will see all will be get joined with that. And if I don't use it, you will see that all will be get joined together. Okay, so if I don't use anything, only the double quote or single quote, the pieces will be get joined or attached to each other. They will be get attached to each other. So this is what the use of join method. Okay, and let's see the last method called as a map method. So what is the use of map method? Yes, anyone can tell me? It will provide you key value. It will provide a key value. तो key value तो यहाँ पे भी आ रही है हमें, यहाँ पे भी आ रही है. तो map method का क्या use होता है? Sir, it gives you a new array after providing any like. Yeah, exactly. So after mapping, Yeah. so it can recreate the new array. It can recreate array. Okay, जो आपका existing array होता है उसे वो recreate करता है. It recreates that array. Okay, that is the use of map method. तो कैसे करता है ये? तो देखिए logic तो same. Logic will be same. Like say I will just say map result. And instead of filter I will use map method. बाकी logic same होता है. But यहाँ पे हम क्या करेंगे? Like I want to create a new array. जिसमें मुझे सिर्फ candidate के name चाहिए. So I can just say return value dot name.
और ये सिर्फ नेम कलेक्ट हो जाएंगे यहाँ. So now if I try to print it, you will see that we will have that. So if I just try to print it, you will have that. Okay? A simple and sober. A simple and sober. We can reuse it. We can just use that. Now, इसके advantage क्या है? What is the advantage of it? Let's say that I want to create a list of the candidate. Okay, तो मेरे पास एक unordered list है. Let's take an example. I'm having unordered list. In that unordered list, I want to print all the candidates there, like Deepak and so on. Okay, तो मुझे वेब पेज पे कुछ इस तरीके से चाहिए सारे candidates के लिए. I just want in that. So how to do it? How we can do it? So what we can do, runtime we can use this syntax structure. हम runtime में syntax structure use कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैं use करूँगा. लेकिन इसे मैं backtick का use करके करूँगा. Not a single code. Backtick. सबको backtick पता है कहाँ पे होता है backtick key? Everyone knows the backtick key. कोई है जिसे पता तुम्हें backtick key मतलब क्या होता है? Yes, guys. where we use We JavaScript. can use multiple line. Yes, exactly. But ये key कहाँ पे available होती है? Below your escape key. कीबोर्ड पे जो escape की key होती है उसके नीचे वो available होती है. So backtick. And the common use of backtick is to provide the multi-line support. Okay? एक से ज्यादा लाइन अगर मुझे लिखनी है स्ट्रिंग की तो वो multi-line support दे सकता. So now if I save this, you will see that I will get all the li elements. लेकिन मुझे इसमें दीपक नहीं चाहिए. I want every candidate name. So what we can do, we can write it like this: value dot name. तो ये क्या डायरेक्टली रन होगा? The answer is no. ये डायरेक्टली रन नहीं होगा. तो अगर मुझे कोई वेरिएबल को अगर यूज करना है, if I want to use a value as a variable, तो हमें कर्ली ब्रैकेट देने पड़ते हैं. This is called the string interpolation. इसे टेक्निकली स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहते हैं. और ये कर्ली ब्रैकेट के पहले डॉलर देना इंपॉर्टेंट है, तभी वो वेरिएबल को रेंडर करे. This is also called as a string expression. And now you will see that I will get this one. तो अभी हमें पता है कि ये एरे को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है. कौन सी मेथड यूज करेंगे हम उसके लिए? Join. To string. कैसे पुश स्ट्रिंग यूज करेंगे? अभी तो देखा ना कि एरे को स्ट्रिंग में क्या यूज होता है. इफ आई वांट टू कन्वर्ट एरे टू अ स्ट्रिंग, क्या यूज करेंगे हम? Yes, you can tell me. Join method, right? We can use a join method. तो ये जो मैप का जो रिजल्ट आएगा उसको मैं join अगर मेथड यूज करता हूँ, if I use single quote in that, आप देखोगे कि मुझे HTML का कोड जनरेट हो जाएगा. And then we can push this code from JavaScript in HTML. And we will get the list like this. ये तो मैंने कॉपी पेस्ट किया, but you will get a list like this. So we can generate the sequence of elements with a dynamic logic and we can print it. That's why map method is very important. Map method सबसे important method है और ये React में भी use होती है. It also works with React. ये चीज याद रखें. So everyone is clear with the logic that what is the use of map, what is the use of join? Any question, any query? No, sir. ये जिनका कंप्लीट नहीं हुआ मुझे समझ में आ गया. Everyone is clear with this? Yes. Yes, sir. Okay, great guys. So just I will pause for 1 minute. Okay, then again I will resume.
Yeah, great one. Yes, my audio is clear. Yes. Okay, good. Guys. I think so. My screen is also visible. So these are the Yes, sir. typical array method. These are the typical array method which we use in our day-to-day development. तो हमारे day-to-day के development में हम इसका use करते हैं. We just use that in our day-to-day development. This is one of the important methods, and you must always be clear with these methods. Okay. Yeah. So now, so yeah, we have seen that which are the different types of array methods: map, for each, filter, find, and join. Okay. Apart from there are some more methods which you can use for your development. Okay, that is like say reduce. Hello, And we sir. also use like say sort. Yes, please. Hello, sir. Sir, I want Yeah, to please. ask one question. Like map or for each में, like if I want to use map or for each function में, तो if मैं उसमें difference हाँ, तो क्या difference रहेगा ये है, difference ये अगर है मैं कि दोनों for यूज each, करूँ? yeah, the difference is that for each return नहीं करता है. For each never returns. Okay, it आप उसे returns return null. नहीं कर सकते. Sorry. Okay, it returns null. Yeah, it returns each. null. ये कभी भी return नहीं करता है. Okay, for each कभी return नहीं करता. It always returns void. For each हमेशा void return करता. Okay, remember. So if I try to return the value like this, okay, और मैंने अगर इसको कलेक्ट करने की कोशिश की, ओके, तो ये एक्चुअली आपको कोई भी वैल्यू देगा. तो ऑन लाइन नंबर 77 I'm प्रिंटिंग इट. सो दिख रहा है आपको कुछ? डू वी आर गेटिंग एनी डेटा? नो. सो फॉर ईच एक इटरेटर है. आप सिर्फ उसको इटरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं. बट जब हम मैप को यूज करेंगे, इट इज बेसिकली यूज टू रिक्रिएट द एरे. तो ये रिक्रिएट करने के लिए यूज होता है. दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फॉर ईच एंड मैप मेथड. Okay. Thank you. Yeah. So still you will see it returns nothing. It return करेगा ही नहीं. Okay. Fine, guys. So let's remove this one. Yeah. So these are some methods which we can use with respect to the array functionality. So till here everyone is clear. Just give me a last call. I just want it from everyone. हर किसी को समझ में आ गया है? Everyone is clear with the point? Yes. Yes, sir. Sir. Yes, Sir. Okay. Great one. So now I will create one more file, and now I will say ES6 feature. तो अभी हम ECMAScript 6 के वर्जन के फीचर्स सीखने वाले हैं. Okay. So till here, if you are clear, then there is no problem, guys. Okay. If you are very clear with this point, then there is no problem. Because इसके बाद जो आप अभी सीखेंगे, ये आपके जावास्क्रिप्ट में, रिएक्ट में यूज होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी. Okay. So now we are going to start our JavaScript ES6 part. Okay. जिन कैंडिडेट का जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं हुआ है, दे आर गोइंग टू डू दैट वन इन द अपकमिंग डेज. ओके. बाकी जो पॉइंट्स है वो वहां पे आप सीख जाओगे. बट द मेजोरिटी पॉइंट विच आई नीड टू क्लियर फॉर यू गाइस वाज दिस पॉइंट्स. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द ES6 फीचर्स. सो अभी जावास्क्रिप्ट में ऐसे बहुत सारे चेंजेस है जो ES6 में ऐड किए गए. ओके, दे आर बीन एडेड इन द ES6. They have been added in the ES6. Okay. So उनमें से हम कुछ पॉइंट देखेंगे जो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है. So which are the topic which we are going to see? The very first we are going to see destructuring. Second we are going to see spread operator. Third we are going to see, ऑलरेडी हमने रेस्ट और डिफॉल्ट पैरामीटर लिए, तो मैं वो लूंगा नहीं अभी. ओके. रेस्ट एंड डिफॉल्ट पैरामीटर ऑलरेडी हमने ये फंक्शन के अंदर लिए. So I will not take it. Then we will move towards the next point, that is the promises. Promises के पहले हम
क्लास सिस्टम देखेंगे, क्लासेस इन जावास्क्रिप्ट। इसके साथ साथ हम एरो फंक्शन भी देखेंगे। फिर हम प्रोमिसेस पे काम करेंगे। प्रोमिसेस के अंदर हम असिंक देखेंगे, एंड देन वी विल सी असिंक अवेट। Once we complete with the async await, then we are going to see local storage. Then we are going to see the local storage. Okay. And then we are going to move forward with respect to the Node.js. फिर हम Node.js पे जाएंगे. This is what the logic we are going to build. तो कुछ इस तरीके से हमारा criteria रहेगा. Okay, so we are going to shift on the Node.js after completion of these topics. तो अभी one by one इन topic को समझ लेते हैं. One by one we will discuss these topics and let's understand this topic. कि ये topic क्या है और किस तरीके से हम उनका यूज कर सकते हैं. Okay. So the very first I will just say es6.js and let's implement it. So now you guys are aware of what is exactly the array is, right? तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर मैंने array अगर यूज किया, if I use array, okay, like say array, and if I try to get the value, जैसे कि मुझे कुछ value get करनी है, जैसे 10, 20, 30, 40, या फिर मैं दूसरी value यूज करूंगा. Like say I will use some names, like say ABC, XYZ. Then I will just use like say PQR. Then we are having MA, LMN. Okay, so we are having this value. अभी destructuring क्या होती है basically? Anyone knows what is the destructuring? Yes, anyone knows what is the destructuring? Yes, sir. We can expand. Like we can destructure means like when you save. Like I can that array. I can expand that array through like giving a particular index number or like particular like if I want to destructure. Okay. So I can give roll number. I can give a like roll number 1, 2 like that only, sir. I can Okay. save that in particular array. Sorry, I know, sir, but I can explain that thing, sir. I know that. ऐसा ही होता है इंटरव्यू में. जब आप जाते हो आपको सारी चीजें पता होती है बट वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं. दैट इज ये नॉर्मल. जब मैंने भी मेरे पहले इंटरव्यू दिए थे मैं भी रिजेक्ट हो गया था. व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट हैबिचुअल विद द एक्सप्लेनेशंस. होता ही है. ओके, इट्स अ वेरी नॉर्मल सिनेरियो. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट. सो व्हाट इज द I can डिस्ट्रक्चरिंग? write, sir, because क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर मुझे कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना है एरे से तो मैं डिस्ट्रक्चरिंग यूज कर सकता हूं? कैन आई से इन दैट वे? Like say I want to extract some data, extract some values. If I want to extract some values, okay, we can use destructuring. Now destructuring is of two types, object destructuring and array destructuring. Now we will see one by one that what is exactly the array destructuring is and how to use it. जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास मुझे क्या करना है, एबीसी को कॉल करना है. सो हाउ वी कैन कॉल इट बाय यूजिंग इन नॉर्मल वे. वी कैन यूज एन इंडेक्स ऑफ इट. कैसे कॉल करेंगे हम इंडेक्स से? यस, हु कैन टेल मी? ट्राई टू स्पीक. We will use zero array number. Arrays. Index number. We can use Zero. the array index, right? Array syntax, that is square brackets. And then I can pass a number. So you will see that it will be get printed. So ये print हो जाएगा, right? It will be get printed over here. What if I want to call the second value? In the same way I can call it, like say XYZ array of 1. Now let's say that I want to store them in a variable. मुझे एक variable के अंदर उन्हें store करना है. So now, like say I want to store them in a variable. So what I can do? I will just say like say var1 equals to array of 0.
देखिए सीक्वेंस में मुझे स्टोर करना है var2 एंड var3. तो अभी जैसे कि मुझे ये सीक्वेंस में स्टोर करना है var3 array of 1 and var4 array of 1. Array of 1, array of 2. Just sorry guys, I will just say it's as a 2 और ये रहेगा 3. So now if I want to print them, like say array of 1, array of 2, var of 2 and var of 3. So you will see that it will be get printed ABC, XYZ, and here I will just say 3. And then I will say XYZ. See, it's been printed. But यहाँ पे क्या हो रहा है, हम extra code use कर रहे हैं, line of code बढ़ रहा है. So the shortcut is to work with the destructuring. तो यही कोड हम destructuring में कैसे कर सकते हैं? Let's check with the experiment. तो कैसे करेंगे यही particular operation. So we can extract the same in the same sequence. We can extract it. So इसके लिए syntax कुछ इस तरीके से. You will have a let और left side को as मैं array use कर रहा हूँ, left side को मैं array use करूँगा. Array syntax. That is square bracket. And then I will use that particular array over here. तो अभी जहाँ ये जो स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर मैं यूज करूंगा वेरिएबल 1 जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है. जस्ट आई विल यूज द सेम. Yeah, var 1, And var then- 2, var 3, yes. Yeah. So for second one I will just use var of 2. तो यहाँ पे क्या होगा? What will happen guys? The runtime a variable will be get declared and the value will also get assigned. Yes, any question? Okay. So runtime, yes. Okay, no question. So यहाँ पे क्या होगा? रन टाइम वो वेरिएबल पे असाइन होगा और उसकी वैल्यू भी यहाँ पे असाइन. Run time the variable will also get assigned and runtime value will be also assigned. So I can just run this one with respect to this. Okay, I can run this one with respect to, and you will see the ABC and XYZ will be there. So it extracts the data in sequence as per the given index. Okay, अगर मान लेते कि मुझे यहाँ पे var3 भी चाहिए, so हम वो भी यूज कर सकते हैं. Okay, and you will see that it works. But अगर मान लेते कि आपने कहा था दीपक मुझे ये एलिमेंट चाहिए लास्ट वाला, तो फिर उसके लिए आप डिस्ट्रक्चरिंग नहीं यूज कर सकते बिकॉज आपको सीक्वेंस में ही जाना पड़ेगा. सो फॉर दैट ये वाला जो लाइन नंबर 8 था ये वाला परफेक्ट टू गेट एग्जैक्ट इंडेक्स पोजीशन. बट अगर श्योर नहीं है इन दैट केस यू जस्ट नीड टू पास इन सीक्वेंस ओवर हियर. दैट्स इट. सो इफ यू आर श्योर you can give a sequence. If it is very far, then you can use an index. And this is what the destructuring in array comes into the picture. Yes, Vaibhav, you are having some question? No, sir. Yeah, yes. So everyone is clear till here? Any question, any query? So this is the syntax, guys. Yes, any question, any query? Everyone is clear? Just give me a ping, guys. Everyone is clear with this concept? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो अभी यही चीज हम ऑब्जेक्ट में कैसे कर सकते हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक रेस्टोरेंट्स की डिटेल्स, जिसमें रेस्टोरेंट की डिटेल्स है. ओके, एक रेस्टोरेंट, जैसे कि रेस्टोरेंट का नाम रहेगा. लेट्स से आई वांट टू डिफाइन दैट इन ऑब्जेक्ट. तो जैसे कि रेस्टोरेंट का नाम रहेगा, लाइक से टेक एन एग्जांपल ग्रीन कैप. लाइक उसका लोकेशन रहेगा, लाइक से सिंहगढ़. ओके, आई विल जस्ट से सिंहगढ़. स्पेलिंग रॉन्ग कर दी क्या मैंने? शायद से.
SING कोई बता सकता है? अभी करेक्ट सिंह लाइक से सिटी रहेगी पुणे, ओके, एंड लाइक से उसकी कॉस्ट रहेगी मिनिमम कॉस्ट इन दिस कैफे लाइक से मीन कॉस्ट इज लाइक से 99 रुपीज, so I will use 99. सो अभी जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट यूज किया, आई जस्ट यूज एन ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि मुझे ऑब्जेक्ट में कुछ डेटा प्रिंट करना है, लेकिन लॉग आई जस्ट वांट टू प्रिंट द डेटा। तो हर जगह पे हमें कैसे यूज करना पड़ेगा, रेस्टोरेंट डॉट नेम, एंड यू विल सी दैट नेम विल बी गेट प्रिंटेड लाइक से ग्रीन कैप। तो यही कोड आपको बार बार यूज करना पड़ेगा। अगर मान लेते कि मुझे सिटी चाहिए और मिनिमम कॉस्ट चाहिए, सो इन दैट केस यू विल सी दैट इट विल गिव यू एन ऑब्जेक्ट। या फिर लोकेशन चाहिए, तो आपको दिखेगा दैट इट विल गिव लोकेशन लाइक ग्रीन कैफे सी अगर 90। But using this repetitive code is not good practice. So what we can do, I can just say let, और मैं ऑब्जेक्ट को भी डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। I can destructure the object also. कैसे? सो ऑब्जेक्ट के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, लेफ्ट साइड को और राइट साइड को मैं एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा। And now whatever I want to extract, I can extract it. Like say I can extract name. तो अगर ये नेम एक्सट्रैक्ट किया तो आपको उसको यहाँ पे यूज करने की कोई जरूरत, एंड यू विल सी यू विल गेट अ नेम। अभी यहाँ पे एक स्क्रैच आता है, क्यों? बिकॉज प्रीवियसली इन जावास्क्रिप्ट नेम वाज अ रिजर्व कीवर्ड। तो क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज यस। तो इस कर्ली ब्रैकेट के बाद अगर मैंने कोलन दिया एंड इफ आई जस्ट से लाइक से रेस्टोरेंट नेम, तो अभी ये नेम नहीं यूज होगा, इंस्टेड ऑफ दिस नेम रेस्टोरेंट नेम यूज होगा। तो आप इसे रन टाइम एक वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं, एंड यू विल सी दैट इट वर्क्स। यही चीज अगर मान लेते कि मुझे लोकेशन करना है, तो लोकेशन क्या है? बेसिकली यू विल गेट एन एरर कि लोकेशन इज ऑलरेडी डिक्लेयर, बिकॉज लोकेशन नाम का ऑलरेडी एक इनबिल्ट ऑब्जेक्ट होता है। सो उसको आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। सो आई कैन जस्ट से एलओसी एंड आई कैन राइट दैट एलओसी ओवर हियर, okay, and just let's save this. So let's remove this restaurant and you will see that it works. Okay, it works. And this is what the logic is. So इस तरीके से आप logic को build कर सकते हैं. So this is what a destructuring. Extracting the data from an array is the thing but a destructuring. Array or an object. So this is called the destructuring. So I hope so it is clear to you guys. लोकेशन कोलन LOC लिखने की जगह सिर्फ लोकेशन लिख के भी हो सकता है क्या? लोकेशन लिख के, हाँ, we can, लोकेशन एक रिजर्व कीवर्ड है, सॉरी रिजर्व ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया है। ओके, अगर कोई दूसरा रहता जैसे इंस्टेड ऑफ लोकेशन 1 है, तो अगर सिटी रहे तो सिटी तो कोई रिजर्व कीवर्ड है नहीं। ओके, तो सो वी कैन यूज दैट इन कंसोल। ओके, राइट। जो रिजर्व होते हैं वो आप रीनेम कर सकते हैं, या फिर आपको रीनेम करने तो आप कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द लॉजिक ऑफ डिस्ट्रक्चर। Yes, any question, any query clear? यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं किसी के पास? Okay, great. So now let's see the spread operator. तो कोई बता सकता है कि spread operator क्या होते हैं? Yes, anyone? So 3 dots like can access a array I have an array like 1 2 3 and I want to that in my second array, so I can use 3 dot then the array name and I can add more array number in that, sir. Okay, you can. Answer is near about correct. So कोई मुझे बता सकता है क्या
वैल्यू वेरिएबल बाय वैल्यू और वेरिएबल बाय रेफरेंस में क्या फर्क होता है, या फिर क्या होता है ये? वेरिएबल बाय रेफरेंस में अगर समझो मैंने कुछ रेफरेंस दिया है एंड मैं अगर रेफरेंस चेंज करता हूँ तो जिसका रेफरेंस दिया था उसका भी वैल्यू चेंज होता है, मतलब दोनों एक ही मेमोरी में एक ही जगह पॉइंट करते रहते हैं, तो कोई भी एक चेंज होता है तो दूसरा भी चेंज होता है इन केस ऑफ वैल्यू बाय रेफरेंस, बट वो वैल्यू वेरिएबल बाय वैल्यू में नहीं होता है। एग्जैक्टली इन्होंने जो बताया वो नियर अबाउट करेक्ट है, तो उसी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अभी। लाइक हाउ मेनी ऑफ कैंडिडेट्स आर नोइंग पॉइंटर कंसेप्ट? पॉइंटर का कंसेप्ट किन लोगों को पता है? सी में या फिर सी प्लस प्लस में किसी ने यूज किया पॉइंटर्स? चलिए यहाँ पे यूज करके देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअली पॉइंटर है नहीं, डोंट वरी, बट लेट्स सी द कंसेप्ट। लेट्स से दैट कि मेरे पास एक वेरिएबल है, लेट आई विल से वेरिएबल लाइक से वैल्यू, एंड देन आई विल से मैं यहाँ पे वैल्यू यूज करूंगा, एंड देन आई विल से लाइक से एबीसी। अभी आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, व्हाट विल हैपन इफ आई जस्ट से लेट लाइक से वैल्यू अंडरस्कोर 2 equals to value. So now guys tell me that what is the output of value 1 in value 2? तो क्या आउटपुट रहेगा वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का? ABC Both are going to be same, right? दोनों सेम रहेगी, ABC ABC. Now tell me what will happen if I try to change the value of 1? तो क्या आउटपुट आ सकता है? AAA and ABC. A and ABC will be there, right? So यही चीज आपकी नंबर के लिए भी होगी। अगर आप नंबर पास करते हैं तो भी ये भी चीज सबकी नंबर के लिए भी होती है। ओके यही चीज आपके नंबर के लिए भी होती है। You will see that the number is there. Okay, it happens. But now if I ask you कि मैंने अगर यहाँ पे एक एरे डिफाइन किया और उसकी अगर इंडेक्स पोजीशन अगर चेंज कर दी, तो अभी मुझे एक बात बताइए कि क्या आउटपुट आएगा वैल्यू 1 में और वैल्यू 2 में? यस गाइस, क्या आउटपुट आएगा? 8. 8 and 9. Yeah, so when you say 8, when you saying both will be 9. Yes, और कोई? सर 9। So 9 दोनों जगह पे आएगा. Now can you tell me that why 9 will be there and why 8 will be not there? Yes guys, Because we reassigning value. so as we are assigning value. 9 के लिए हम इंडेक्स 0 सेट कर रहे हैं ना। Okay, no. So Yes, we assigning value by reference. Yeah, it is due to value by reference. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Just try to understand. दोनों जगह पे सेम आउटपुट आएगा. You will get the same output. तो ये क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे आप रेफरेंस पास करें, तो यहाँ पे एक्चुअली एरे नहीं स्टोर होता है, उसकी मेमोरी एलोकेट होती है, मेमोरी स्टोर होती है, जैसे कि x001, तो इस वेरिएबल की मेमोरी जैसी ये है, तो उसी तरीके से ये वाली मेमोरी होती है। ओके, तो लाइक आई एम हैविंग दिस टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों में ये वैल्यू स्टोर होगी 001, x001 एंड 001, तो उसकी वजह से आप कोई भी चेंज कीजिए, ये रेफरेंस यही रहेगा। ओके, सो सेम रहेगा। तो उसे आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? बाय यूजिंग द स्प्रेड ऑपरेटर। तो अगर मैंने स्प्रेड ऑपरेटर को अगर यूज किया तो हम एरे को रिक्रिएट कर सकते हैं। ओके, so we can use a spread operator, and now that spread operator will never have problem.
Okay, we can use a spread operator. Spread operator मतलब 3 dots होते हैं. 3 dots in front of array. Okay, that is what the spread operator will come to the picture. Fine. So the same thing we can do with the array also. जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक रेस्टोरेंट का डेटा है. Okay, so I will just say that I will have a restaurant details. Okay, so जैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट को मैं लिखूंगा रेस्टोरेंट डिटेल्स और यहाँ पे मेरे पास रेस्टोरेंट का नाम है और उसकी मिनिमम प्राइस है. लेकिन ये जो दो चीजें ये एक्चुअली लोकेशन के अंदर आती है. So I will just say let my location. Okay. So now, just a minute, guys, not MySQL, yeah. So यहाँ पे जैसे कि मुझे यहाँ पे लिखता है जैसे कि सिटी डिटेल्स, सिटी डिटेल्स. City details. Just a minute, guys. City details. Okay, and now what I will do, just I will add some more values to it. तो चलिए ये value add करते हैं. So now what I will do, simply, just I will say that this is going to be an object which will have a city name and the locality. And now I just want to work with it. So now see guys, just wait for a minute. I just missed one concept. I'm just sorry for that. So अभी ये जो अरे मेरा कैमरा ऑफ है. I'm sorry. Yeah. So now I'm having this particular array. तो मेरे पास अगर और एक array अगर रहेगा तो हम उसे merging भी कर सकते हैं. So spread operator is used to recreate. It is used for avoid the reference of array. Avoid the reference issue. Avoid the reference issue. And also to merge to array. And also merge to array. Two or more array. Perfect. So that is the use of it. So let's say I'm having one more variable, like say variable that is val. Okay, so it will have a var. Okay, and this will be like say var 4. So take an example, if this is also an array, we can merge that array by using the spread operator. So I just need to use 3 dots and then a var 4. That's a variable name. And if I try to print it, you will see that it will be there. Now see guys, as the spread is there, both the arrays are different. You don't need to be worried about it. Okay, a simple and a very sober thing, which we can just use for the development. Okay, now the same thing we can do with the object also. तो चलिए अभी object पे काम करते हैं. Same thing I can do. Okay, same thing we can just do it over here. So let's uncommit it. And let's say that I want to just merge two of array.
Okay, so let's remove this one. And just I will say this is the details. And the last thing which I will do, that is I will just merge both of them. So let's merge this array. So here I will just say let user, sorry, restaurant details. Let's remove this one. Okay. So restaurant name. And then I can just use a spread operator over here. 3 dots and then the name. And again, I will just have that. Okay, so let's use the 3 dots. What I'm doing. 3 dots and then I will say city details. And let's print this restaurant details. Console.log. And let's use it. And you will see both will be get merged. So now the new array will be get created. So in React, this is used very, very common. Okay. Yes, any question, any query till here? Yes, guys, any question, any query till here? Everyone is clear with the spread operators? Yes, guys, just give me a ping. Yes. Yes, race candidate, it's clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Okay. So now, तो दे यहाँ yes, पे कितने भी हम मर्ज कर सकते हैं, मतलब स्प्रेड कर सकते हैं मल्टीपल। अगर मेरे ऑब्जेक्ट्स है उनको भी मैं कंबाइन कर सकता हूँ, राइट? yes, you can do that. But उसका criteria क्या है? That you must use a spread operator for that. Okay, that is a criteria which you need to do. This is important. Okay, fine. Okay, guys. So now we are going to move toward the next point. Okay, तो यहाँ तक सारी चीजें correct, clear है सबकी? Everyone is clear till here? Yes, sir. Everyone is clear till here? Okay, great. Yes, So sir. now guys, let's move towards the next part. That is a class. अभी कौन बता सकता है कि class क्या होते हैं? What is a class? ये वाला नहीं जो अभी चल रहा है. What is the definition of class in object-oriented programming? Yes. कौन बता सकता है? अमोल. What is a class? Vaibhav. Class is set of properties, methods, and objects. Class is a set of. Class is a set of
properties and method, right? Properties and method. It's a set of properties and method. तो अगर आपको अब जब भी हम कोडिंग करते हैं, whenever we code the application, it's very important that our code must be a wrap up code. हमारा कोड रैप अप कोड होना चाहिए. इसका एक डिसएडवांटेज अगर नहीं हो तो क्या डिसएडवांटेज है? अगर मान लेते कि मैंने अलर्ट अगर यूज किया, अलर्ट इज अ स्पेशल मेथड, राइट? Alert is a special method. So if I just say like say hello to JS, and if I save this, you will see it will generate a pop-up. But now tell me guys, अगर यहाँ पे मैंने अगर एक function लिखा, if I write a function called as alert, and if I use like say nothing over here, what will be the output? So do I will get an error or it will print? Yes, what will be the possibility? क्या possibility हो सकती है? Yes guys, what might be the possibilities? सर अलर्ट को फंक्शन नेम की तरह ये करेगा ना अभी ये, जिसमें क्योंकि फंक्शन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम वी आर पासिंग हेलो टू जेएस टू अलर्ट फंक्शन, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं कर रहे. So it कुछ will not आउटपुट print आएगा anything. आपको या नहीं सो आएगा. कुछ प्रिंट नहीं होगा, राइट? Yes. तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है अभी? आप whatever कोड जावास्क्रिप्ट हैव क्रिएटेड, जो कोड जावास्क्रिप्ट ने पहले क्रिएट किया था, whatever कोड जावास्क्रिप्ट हैव क्रिएटेड, वो सारे की सारा कोड ओवरराइड हो गया. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कोर मेथड आप ओवरराइड कर रहे हो, यू आर ओवरराइडिंग द कोर मेथड्स. तो ये सही है गलत है? आंसर इज ये सबसे गलत बात है. ओके, यू आर ओवरराइडिंग द मेथड्स, कोर मेथड्स आर ओवरराइडेड. तो ये ओवरराइडेड हो रहे हैं, दे आर ओवररिडन, राइट? सो ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों होता है? जब आपका कोड रैप अप नहीं होता है. सेकंड थिंग इज दैट the variables and properties whatever you are using, they are not having the scope, they are not scope divided. सारी की सारी ग्लोबली वर्क हो रही है. सो जो चीजें ग्लोबल वर्क होती है वो सबसे खतरनाक होती है. दे आर वेरी डेंजरस फॉर द डेवलपमेंट. सो दैट्स व्हाई क्लासेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो ये जो क्लासेस है ये 2015 में आए थे. तो किसी को पता है कि 2015 से पहले हम क्लासेस कैसे यूज किए करते थे? व्हाट टेक्निक वी वर यूजिंग बिफोर दैट? सो वी वर यूजिंग फंक्शंस ओनली. हम फंक्शन यूज करते थे और उस फंक्शन को हम ऑपरेशन परफॉर्म करते थे. दैट वाज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन. तो पहली जो पुरानी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं. अभी हम उसको यूज नहीं करते बिकॉज वी आर हैविंग अ क्लास सिस्टम. हमारे पास क्लास सिस्टम होती है जिसका हम यूज करते हैं. सो लेट्स यूज इट नाउ. सो अगर मान लेते हैं कि क्लास को कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज अ क्लास? वी यूज अ कीवर्ड कॉल्ड एज अ क्लास, और फिर हम क्लास का नेम लिखते हैं. लाइक से टेक एन एग्जांपल, क्लास नेम इज यूजर. ओके, या फिर क्लास का नेम है एम्प्लॉय. क्लास का नेम है एम्प्लॉय. ओके, and like I want to define the details of the employee. Like say the employee will have details like this. So I will just say let employee, sorry. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टीज और मेथड को डिफाइन कर सकते हैं. जैसे मुझे एम्प्लॉय का नाम देना है, so I will say name and then I can define the name of the employee, like say Deepak Kumar. Okay, like say what is the role? So I will just say role, like say trainer. Like I will just say trainer. Okay, तो यहाँ पे हम उन्हें डिफाइन कर सकते हैं. तो ये हुई प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज वेरिएबल जैसे ही होती है. रिमेंबर, प्रॉपर्टीज आर लाइक वेरिएबल ओनली.
but they are controlled under the class. और जो methods होती है, methods are like functions only, but they are controlled under the class. That is the difference between. ये इन दोनों के बीच में difference है. There is a very massive difference between. Okay, it's a massive difference between. So क्या मेथड कैसे क्रिएट करेंगे? तो देखिए गाइस, यहाँ पे कभी भी आप लेट कीवर्ड यूज नहीं करोगे, आपको एरर आएगा. क्या एरर आएगा? दैट अनएक्सपेक्टेड टोकन, अ कंस्ट्रक्टर मेथड एक्सेसर्स और प्रॉपर्टीज वाज एक्सपेक्टेड. तो यहाँ पे आप कीवर्ड नहीं यूज कर सकते. इवन आप फंक्शन कीवर्ड भी यूज नहीं कर सकते. जैसे मुझे लिखना है फंक्शन प्रिंट एम्प्लॉय डिटेल्स. ओके, आप ऐसे बाकी से जो यू नीड टू डू दैट. या बाकी जो हुप्स ओरिएंटेड लैंग्वेज में कर सकते हैं वैसा नहीं कर सकते. क्लास में हम फंक्शन नहीं. डिफाइन नहीं कर सकते. नहीं कर सकते हैं ना क्लास में. मेथड मतलब फंक्शन ही है, बट फंक्शन कीवर्ड नहीं चलता है. ओके. हाँ, फंक्शन ही लिख रहे हैं आप, लेकिन फंक्शन कीवर्ड नहीं चलता है. दैट इज वो समथिंग विच इज रिस्ट्रिक्टेड. ओके, सो इट्स अ प्रॉपर्टीज एंड मेथड. जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट है वो सारे यहाँ पे यूज होते हैं. जैसे कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, स्टैटिक मेथड्स. उसके बाद लाइक यू आर हैविंग, आई थिंक सो वी हैव टेकन इनहेरिटेंस, राइट. इंटरफेस आप यूज कर सकते हैं. सारी चीजें यहाँ पे यूज होती है, बट सारी चीजें आप जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं कर सकते. जावास्क्रिप्ट में लिमिटेशंस है. तो ES6 में लिमिटेशन नहीं है. लिमिटेशन कहाँ पे? जावास्क्रिप्ट में लिमिटेशन है कि आप जावास्क्रिप्ट में वो नहीं कर सकते. हाँ, वही चीज आप टाइपस्क्रिप्ट में कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास चाहिए या फिर इंटरफेस चाहिए, तो वो आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं? यू कैन यूज इट इनसाइड द TS, दैट इज अ टाइपस्क्रिप्ट. यहाँ पे नहीं कर सकते. ओके, वन मोर क्वेश्चन. अभी हम कर रहे ES6 कर रहे हैं, राइट? तो इसको कैसे पता चलता है ये जावास्क्रिप्ट है या ES6 है? मतलब क्या हमारे लिए जावास्क्रिप्ट को कोई उसमें कोई लेना देना है नहीं. देयर आर प्रीसेट्स. ओके, वो जो फीचर्स है, सारे के सारे फीचर ऑलरेडी आपके जावास्क्रिप्ट के इंजन में ऐड किए गए हैं. तो फीचर नए हैं या पुराने, जावास्क्रिप्ट कोई लेना देना नहीं. सो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को, बट वो इंटरफेस या फिर एब्स्ट्रैक्ट को सपोर्ट नहीं करता है. जिन्हें नहीं पता एब्स्ट्रैक्ट क्लास या फिर इंटरफेस क्या होता है, करंटली छोड़ दीजिए. बट दीज आर द some of the advanced features which you can use to enhance the productivity of your application. एप्लीकेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं, जो जावास्क्रिप्ट में कंपलसरी नहीं है. ओके, ओके, मतलब जावास्क्रिप्ट में हम वो डिफाइन करेगा तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा ये ES6 है. yes. जैसे तो वो कि मैं हमारे लिए है. जैसे कि मैं ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट सेट कर रहा हूँ. एब्स्ट्रैक्ट, तो अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करूंगा, इट विल से दैट अननोन कीवर्ड. ओके, डू यू मीन एब्स्ट्रैक्ट? मैंने स्पेलिंग गलत कर दी. एब्स्ट्रैक्ट, हाँ, आई थिंक सो. एब्स्ट्रैक्ट. तो देखिए ये कीवर्ड तो उसने डिटेक्ट किया, लेकिन इसने क्या कहा? एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर कैन बी ओनली यूज इन, कहां पे यूज कर सकते हैं? इन टाइपस्क्रिप्ट. दिख रहा है? अगर यही चीज अगर मैंने इंटरफेस भी अगर यूज किया, जिन्हें नहीं पता वो छोड़ दीजिए. ओके, डोंट वरी. सो यहाँ पे इंटरफेस यूज कर सकते हैं आप. ओके, बट इट विल हैव एरर. सी, इंटरफेस मस्ट बी गिवन विद द नेम. तो यहाँ पे जैसे मैं नेम यूज करूंगा, जैसे कि यूजर. So now it will say that interface declare and can be only used in the TypeScript. दिख रहा है? yes. Interface one more Yeah. confusion, like TS और जावास्क्रिप्ट मतलब टाइपस्क्रिप्ट मैं मतलब ही ES6 है क्या? मैं बताऊं. नहीं, मैं बताऊंगा. टाइपस्क्रिप्ट मतलब जावास्क्रिप्ट का एक सुपर सेट है, जिसमें और ज्यादा फीचर्स आप ऐड कर सकते हैं. ओके, वो मैं थोड़ा आगे चल के बताऊंगा. ओके, रिमेंबर दैट. टाइपस्क्रिप्ट मतलब ES6 नहीं है. ES6 एक वर्जन है जावास्क्रिप्ट का. ओके, ES6 एक वर्जन है जावास्क्रिप्ट. टाइपस्क्रिप्ट क्या है? टाइपस्क्रिप्ट आप जावास्क्रिप्ट में जितने भी फीचर्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं,
और उसके अलावा और ज्यादा कुछ फीचर्स है जो टाइपस्क्रिप्ट में अवेलेबल है. इट्स अ सेपरेट सेट. ओके, देयर इज अ सेपरेट सेट which uses the behavior of JavaScript. तो अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन रहेगा दैट व्हाई वी आर नॉट यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट देन. रीजन ये है कि टाइपस्क्रिप्ट सिर्फ डेवलपमेंट के लिए यूज होती है, प्रोडक्शन में यूज नहीं होती. तो अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो टाइपस्क्रिप्ट का, उसको आपको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी वो कोड रन होता है प्रोडक्शन के लिए. ऐसा प्रोडक्शन के लिए रन नहीं होता है. आप ब्राउजर के अंदर टाइपस्क्रिप्ट की फाइल कॉल नहीं कर सकते. इट्स नॉट पॉसिबल. आपको उसे कन्वर्ट ही करना पड़ता है, तभी आप उसे कॉल कर सकते हैं. सो ओनली जावास्क्रिप्ट इज सपोर्टेड. ओके, वन मोर क्वेश्चन, लाइक रिएक्ट जेएस के लिए हमें टाइपस्क्रिप्ट चाहिए या जावास्क्रिप्ट सफिशिएंट? आप कोई भी एक चूज कर सकते हो. अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट आती है तो आप टाइपस्क्रिप्ट पे भी कर सकते हो. अगर आप जावास्क्रिप्ट आती है तो आप जावास्क्रिप्ट पे भी कर सकते हो. मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस करंटली आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट. टाइपस्क्रिप्ट बहुत ही रेयर है. जैसे कि मैंने भी बहुत सारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ली है, तो बहुत ही मिनिमल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स है जिनमें टाइपस्क्रिप्ट का यूज किया है. बहुत ही मिनिमल है. ओके, बट मेजॉरिटी आर हैविंग द जावास्क्रिप्ट. सो डोंट वरी, योर फ्यूचर इज सिक्योर. ओके, बहुत ही रेयर है. और डोंट वरी, अगर आपको नई भी टाइपस्क्रिप्ट आती है तो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनर अरेंज करती है उसके लिए. ओके, बट आपको रिएक्ट आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है. इज दैट ओके? या बट अगर आप Yes, sir. एंगुलर के लिए जाते हो, इफ यू आर गोइंग फॉर एंगुलर, कंपल्सरी यू मस्ट नो टाइपस्क्रिप्ट, बिकॉज एंगुलर टाइपस्क्रिप्ट पे ही काम करता है. ओके, विदाउट टाइपस्क्रिप्ट यू कांट राइट अ कोड, अ सिंगल कोड ऑफ एंगुलर. दैट इज समथिंग विच इज लिमिटेशन. रिएक्ट में ऐसा कोई लिमिटेशन है नहीं. जिसको जावास्क्रिप्ट आती है वो जावास्क्रिप्ट से लिख सकता है, जिसे टाइपस्क्रिप्ट आती है वो टाइपस्क्रिप्ट से भी लिख सकता है. ओके, इज इट क्लियर? Yes. Fine. Yes. Any more question, guys? Shall we move forward? So basically, class क्या होता है? Class is a collection of properties and method. One more definition of class is, किसी को पता है second definition class की क्या है? Class is a blueprint of object. एक ऑब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट क्लास होता है. इसका मतलब क्या? हम क्लास के ऑपरेशंस को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. So for that, we need to create an object of it. We need to create an object of a class. So अगर मुझे क्लास का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें न्यू कीवर्ड की जरूरत पड़ती है. So if I just say like say let, this is like say employee. Employee. So we will use new keyword. What is use of new keyword? New keyword is used to create the object. Object of a class. किस क्लास का करना है तो वो नाम हम न्यू कीवर्ड के बाद यूज करेंगे. And then we will provide a round bracket. So जब हम क्लास का नेम और राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं तो टेक्निकली वी कॉल इट एज अ कंस्ट्रक्टर. क्या कहते हैं हम उसे? We call it as a constructor. So what is the use of constructor? Constructor is having the same name as a class, okay, and it is used or it is been used to assign the properties and method to the object when the object is created. जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज और मेथड असाइन करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है. जो कंस्ट्रक्टर मैंने लाइन नंबर 70 पे लिखा है वो एक्सटर्नल कंस्ट्रक्टर है. इट्स एक्सटर्नल कंस्ट्रक्टर. एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला. ओके, तो ये एक्सटर्नल कंस्ट्रक्टर होता है. एंड नाउ आई कैन जस्ट राइट कॉल एनी ऑफ दिस प्रॉपर्टीज. सो आई कैन यूज console.log एम्प्लॉय डॉट, देखिए मैंने डॉट लिखा तो मुझे सारे सजेशन आ गए. नेम, देन प्रिंट एम्प्लॉय डिटेल्स एंड व्हाट आर दे, यू कैन जस्ट चेक इट. सो देखिए नेम एक प्रॉपर्टी है, प्रिंट एम्प्लॉय डिटेल्स मेथड है, एंड रोल इज अ प्रॉपर्टी. तो मैंने अगर प्रॉपर्टी को प्रिंट किया, यू विल सी इट विल बी गेट प्रिंटेड. ये प्रिंट हो जाएगा. देखिए दीपक प्रिंट हो रहा है लाइन नंबर 69 पे. इट्स वर्किंग. हम फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं. वी कैन कॉल द फंक्शन आल्सो, लाइक से प्रिंट, लाइक से आई कैन से एम्प्लॉय डॉट प्रिंट एम्प्लॉय डिटेल्स.
और फिर इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे console.log यूज कर, I will just use console.log only to say it's a print function, print employee function. It's a print employee details function. मैं यहाँ पे यूज करूँ and you will see it will be get printed. देखिए लाइन नंबर 65 पे ये प्रिंट हो रहा है. तो यहाँ पे as soon as I call this function or call this method, the control is passed to line number 64 and then it is being used. तो ये use होता है, it will be get used. Now the question is that can I call this name directly like this? The answer is no. You can't call it. आप उसे you call नहीं कर सकते. Why you can't call it? Because जैसे आप ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं प्रॉपर्टीज और मेथड को बाहर कॉल करने के लिए, उसी तरीके से हमें एक कीवर्ड चाहिए होता है यहाँ पे, which is called as this. So जब मैं this कीवर्ड यूज करूंगा, this is a special keyword for instance. What is the use of this? This is a keyword to provide a current instance. It is basically used to provide a current instance. That is the use of this keyword. Okay. Now this keyword by default जब आप क्लास के अंदर लिखते हो तो पूरे की पूरे क्लास का रेफरेंस उसमें आ जाता है. So आप कहीं पे भी उसको कॉल कर सकते हैं. And I can just save it. And you will see now it will print Deepak Kumar. And if I want to print a role, I can just say this dot role. So ये वर्क होगा. लेकिन एक चीज याद रखिए, ये जो दिस होता है ये हमेशा चेंज होता रहता है. अगर मैंने ग्लोबली अगर दिस को कॉल किया console.log, if I try to call this as a global this, आपको दिखेगा that it actually, देखिए लाइन नंबर 69 पे. So लाइन नंबर 69 पे. So you will see that actually it refers to the window object. देखिए ये विंडो क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा. So what is a window? Window is a super global variable. It's a global variable. So globally this refers to window object. Globally this refers to the window object. Window object. Okay. Some of the candidate might need to go with this session one more time because ये थोड़ा important है. तो जब हम this बाहर कहीं पे भी यूज करते हैं तो ये रेफर करेगा विंडो ऑब्जेक्ट को. क्लास के अंदर अगर हम यूज करते हैं तो ये क्लास के इंस्टेंस को रेफर करता है, मतलब क्लास को रेफर करेगा. तो दिस जो है वो हर बार चेंज होता है. जैसे कि मान लेते हैं कि करंटली लाइक से टेक एन एग्जांपल लाइक से टेक एन एग्जांपल लाइक करंटली आई एम योर इंस्ट्रक्टर, राइट. मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूं. इन द सेम वे मैं किसी का फ्रेंड भी हूं, राइट. सिंपल वे लाइक मैं किसी का पेरेंट भी हूं, राइट, और मैं किसी का सन भी हूं. तो जो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग होता है वो भी दिस होता है. इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट. जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो आई एम अ इंस्ट्रक्टर फॉर यू गाइस. जैसे मैं मेरे दोस्त के साथ बात करूंगा, आई विल बी अ फ्रेंड ऑफ हिम. ओके. सो जो दिस कीवर्ड होता है, दिस कीवर्ड ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. तो जब एनवायरमेंट चेंज होगा तो दिस चेंज होता है. तो जावास्क्रिप्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखता है दैट दिस कीवर्ड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. और दिस में क्या होता है, करंट इंस्टेंस होता है, उस एनवायरमेंट का करंट इंस्टेंस होता है. जैसे एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय का इंस्टेंस है बिकॉज वो उस एनवायरमेंट के अंदर है. अगर ग्लोबल एनवायरमेंट में अगर दिस हो तो वो ग्लोबल को रेफर करेगा, मतलब विंडो ऑब्जेक्ट को. विंडो ऑब्जेक्ट आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जिसके 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 अंदर मतलब या फिर अंडर विच ऑल द वैल्यूज आर बीन मैनेज्ड. ओके. So we can call the values by using this keyword. And this is the logic how we can implement. This is the logic how we can implement. Okay. So यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी के पास? Any question, any query? Yes, guys. Anyone is having any question, any query? The class, सर जो class function है वो kind of mutable है, like you were saying in the Which one? This one? class function, sir. Class keyword. Sorry, class keyword. It's mutable or like function
फंक्शन जो रहते हैं वो म्यूटेबल नहीं रहते, तो वो कैसे डिफरेंस क्या है, मुझे वो थोड़ा इसमें क्लास का समझ में नहीं आया है सर। क्लास के कैन यू एक्सप्लेन दिस वन वाला? Basically, Yes. what happens when we use a class, whenever we use a classes are commonly used to create a set of behavior. Okay, classes are used to create a set of behavior. Now take an example. Whenever you create a function का एक ही behavior रहेगा. जैसे मान लेते कि मैं एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उसका बिहेवियर एक ही है, राइट और रॉन्ग? एक ही बिहेवियर रहेगा फंक्शन का, राइट? बट जब आप कोई भी क्लास यूज करते हो, तो क्लास में एक से ज्यादा फंक्शंस आप डिफाइन, मतलब मेथड्स आप डिफाइन कर सकते हो, तो उसमें आपके अलग अलग बिहेवियर रहेंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक से वी आर हैविंग अ क्लास एज अ ह्यूमन नाम का एक क्लास है. सो यू नो दैट एवरी ह्यूमन हैज अ नेम, राइट? Like say the human name is Deepak, and now I can create different methods of it. I can create a different methods of it. Okay, I can create a different methods of it. Like say running is one of the method. Human behavior की यही method होती है, that human can run, human can jump also. So I can just say jumping, right? Then I can just say like say talking. Okay, so you will see that these are the set of methods we are having with it. Function के अंदर क्या होगा? Function will be it's only used to perform a particular task only. It's also reusable in nature, but it can't be used for different flavors. But whenever we will use the classes, we can use them. Also, when we use classes, we can extend the class. अगर कोई एक class है तो हम उसे extend कर सकते हैं. Okay, let's say that, like say this is the employee. तो employee एक human है, right or wrong? Employee is a human, right? Employee एक human है. तो जो ह्यूमन की फीचर है वो मैं सारे के सारे एम्प्लॉय को असाइन कर सकता हूं बाय यूजिंग एक्सटेंड्स. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अभी ये हो गया कि मुझे अगर टॉकिंग करना है तो मुझे ह्यूमन के अंदर, एम्प्लॉय के अंदर कोई भी फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं. मैं डायरेक्टली ये टॉकिंग फंक्शन कॉल कर सकता हूं, एंड देन आई कैन से द एम्प्लॉय कैन टॉक, एम्प्लॉय कैन रन, एम्प्लॉय कैन जंप. तो यहां पे हमने इनहेरिट किया है, तो एक क्लास के फीचर दूसरा क्लास इनहेरिट करता है. फंक्शन के अंदर वैसा नहीं होता है. वन फंक्शन कांट इनहेरिट द बिहेवियर ऑफ सेकंड फंक्शन, ऐसा नहीं होगा. Okay, sir. Yeah, that is very important. Okay, so whenever I want to do such a kind of operation, we can do it. Okay, with respect to the part. So अभी ये मैं नेक्स्ट सेशन में और डीप में समझाऊंगा ठीक से कि इनहेरिटेंस क्या होता है, और ये एग्जांपल दूंगा. Okay, because today we are just going to wind up with our time, so I need to take some questions also. Okay, so guys, let's take a quick recap what we have seen in today's session. So today we have seen the types of function. आज हमने फंक्शन की टाइप्स देखे, जिसमें हमने देखा कि कॉलबैक का फंक्शन होता है. वी आर हैविंग अ कॉलबैक फंक्शन एंड इट्स नथिंग बट इट्स अ फंक्शन डिफाइनिंग अ अदर कॉल, ओके, इन द डिफरेंट कॉल ऑफ द फंक्शन. जिस फंक्शन के अंदर वो कॉलबैक फंक्शन लिखा जाता है उसे हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं. Also we have seen that there are a couple of array methods like for each, for reading the data, for searching we use find and filter, and also we are having a map method in which we can recreate the array. To convert the array from string to convert array to a string, we use join method. There are two more methods which we are going to see, arrow method, that is arrow method, and IIFE that we are going to see in the upcoming sessions. Then we have started the features of ES6 in which we have seen the restructuring, that is extracting the data, and also we have seen the spread operator, that by default arrays and objects are having value by references. So there are the problems when we are having an array. If I assign that array to another variable, due to the reference, the problem will be generated. So that's why we can use a spread operator to recreate or to create a new array. So it can also use to merge and avoid the issue of reference. Then we have seen that we have just seen that the same thing can be done by using the object also. And then we have started the next concept that was called as a class.
So basically the class is nothing but a set of properties and methods, or you can call it as a blueprint of an object. In a class as you can write multiple properties and multiple methods. Properties are like variables and methods are like functions, but they are controlled under the class. And at the end, we have also seen to create to use this all the features of functionality, we need to create an object of a class. And we can just create an object of the class by using new keyword. And to assign all the properties and method, we need to call the constructor of it. This constructor is called the external constructor. In next session, we are going to see what is a basically inheritance means, what is the use of super keyword, and then we are going to see that what is the use of inline internal constructor. And then we will move towards the next point that is called as a arrow functions. Also, we are going to see some APIs which are inbuilt inside the JavaScript, like set timeout, set interval. And what is the difference between an expression function and arrow function? Those are the topics which we are going to see in the next session. Yes, किसी के पास कोई question, कोई query है? Any question, any query? Yeah. Are you going to share this code as well, today's code? Yes. Just give me a minute. I will just quickly create a repository for you guys. Yes, guys, समझ में आ रहा है हर एक को? Just give me a ping. यस सर, समझ में आ रहा है सर। एक क्वेश्चन और भी था, लाइक हमने पहले बात किया था, जैसे कि अगर मैं स्ट्रिंग को लाइक नंबर को स्ट्रिंग से माइनस करता हूँ और एडिशन करता हूँ। यस। हाँ बोलिए सर। हाँ तो सर उसमें एक चीज पूछना था, जैसे कि आप नंबर को स्ट्रिंग में अगर प्लस साइन से कॉन्केट करते हैं तो वो एडिशन क्यों नहीं होता था, वो डायरेक्टली कॉन्केट क्यों होता है? एंड सेम चीज अगर वो माइनस करते हैं। Yes, go ahead. I'm sorry for the interrupt. Yes, Jai, just pull it. जब हम उसको माइनस कर रहे हैं तो वो एग्जैक्टली इसको नंबर में कन्वर्ट करके उसको माइनस कर रहा है। बराबर। बट जब हम कॉन्केट कर रहे हैं, जब एडिशन साइन देते हैं बीच में, तो डायरेक्टली सिर्फ कॉन्केट होता है। तो व्हाई दैट इज डिफरेंस? बिकॉज उसको भी नंबर में कन्वर्ट कर देना चाहिए, जैसे कि अभी वो स्ट्रिंग नंबर है तो उसको भी कन्वर्ट करना चाहिए ना, ताकि वो एडिशन हो जाए। बराबर। एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू प्लस इंडिकेटर, दैट इज अ प्लस सिंबल, तो प्लस सिंबल के दो बिहेवियर है। Okay, in JavaScript, plus is used for two signs. Either it can join a string or either it can make the arithmetic operation. Arithmetic operation तभी परफॉर्म होगा जब वो प्योर नंबर है, दोनों वैल्यूज। अगर उनमें से कोई भी एक वैल्यू अगर स्ट्रिंग है, सो इट विल ट्राई टू ज्वाइन देम। यहाँ पे स्ट्रिंग को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है। ओके, सो दैट इज अ बिहेवियर ऑफ एडिशन। उसे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। कहाँ पे? यू कैन रिस्ट्रिक्ट दैट वन इन टाइपस्क्रिप्ट। आप टाइपस्क्रिप्ट में उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट में आपको वो रिस्ट्रिक्शन नहीं कर पाते। जैसे आपको चाहिए कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे एडिशन ऑपरेशन ही परफॉर्म करनी है, सो मैं नंबर स्ट्रिंग नहीं पास करनी है, सो इन दैट केस यू कैन रिस्ट्रिक्ट दैट। आप उसे रिस्ट्रिक्ट कर। बट सेम चीज वो माइनस में फिर वो नंबर में क्यों कन्वर्ट कर रहा है? दैट बिकॉज वी डोंट हैव, हमारे पास माइनस के लिए अल्टरनेटिव ऑपरेशन नहीं है। जैसे कि डिवीजन के लिए अल्टरनेटिव ऑपरेशन नहीं है, मॉड्यूलस के लिए अल्टरनेटिव ऑपरेशन नहीं है, स्टार के लिए अल्टरनेटिव ऑपरेशन नहीं है। तो जिस चीज के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन है ही नहीं, जावास्क्रिप्ट खुद उसे कन्वर्ट करती है। ओके, सिंपल एंड सोबर। जैसे मान लेते हैं कि आप पुणे में हैं, ओके, और मैं जैसे नासिक से बात कर रहा हूं, तो अगर कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं होता और मुझे कुछ चीज आपको देनी है, बट मैं आपको वो पार्सल करके नहीं दे सकता, तो मुझे मैन्युअली आना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट द एडिशन इज। बट लाइक से अगर हमारे पास अल्टरनेटिव, जैसे ब्लू डार्ट से मैं आपको कुरियर सेंड कर सकता हूँ, तो हमारे पास वो अल्टरनेटिव है। सो जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन जो है, उनके पास कोई अल्टरनेटिव है नहीं। ओके, हमारे पास कोई भी अल्टरनेटिव है नहीं, राइट? बट लाइक से अगर आपके पास अल्टरनेटिव हो, जैसे एडिशन में अल्टरनेटिव है, तो पहले वो अल्टरनेटिव चेक करेगा, इज दैट नंबर इज अ स्ट्रिंग? इफ यस, देन इट विल मेक अ जॉइन ऑपरेशन। तो वो लैंग्वेज के इंटरनल बिहेवियर होते हैं। ओके, यस। और कोई क्वेश्चन है?
I will take more 2 minutes and then we will wind up the session. तो ये रिपोजिटरी में हर एक सेशन का कोड आप Yes, कर yes. रहे हैं? इसमें सब सारे के सारे कोड अपलोड रहेंगे आपके. Yeah. You don't need to worry for your code that. Okay? पब्लिक रहेगी ये, आप उसको यूज कर सकते हैं विदाउट ए ट्रबल. और हर एक इसमें फोल्डर अलग अलग रहेंगे. जैसे जब हम Node.js को स्टार्ट करेंगे, दैट विल हैव अ डिफरेंट फोल्डर. और एक क्वेश्चन था, ये रिडक्स वगैरह ये भी हम कवर करने वाले हैं क्या रिएक्ट जेएस में? या तो आपके पास आपका करिकुलम होगा ना? डू यू हैव योर करिकुलम्स? No, sir. नो, आप भेजेंगे तो इट विल बी गुड. ओके, फाइन फाइन. तो करिकुलम अगर नहीं है आपके पास, सो आई विल जस्ट लेट यू नो रिगार्डिंग दैट. ओके, डोंट वरी. आई थिंक सो इट इज देयर. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट. यस सर, जैसे अभी मंथ स्टैक फुल स्टैक डेवलपर है तो लाइक उसमें देयर इज रिडक्स. डिपेंड होता है. लाइक सी, व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट, कुछ चीजें डिपेंड होती है. तो इफ यू आर गोइंग फॉर अ मंथ स्टैक, देयर आर द पॉसिबिलिटीज that the organization is using Redux for the data management or state management. And there might be the possibility that it might be using use context hook. तो डिपेंड करता है चीजों पे. जैसे कि टेस्टिंग में यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स आर नॉट गुड, रिडक्स इज वेरी गुड. तो डिपेंड करता है. मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन रिडक्स का यूज करते हैं. ओके, सो रिडक्स में भी पॉसिबिलिटी है कि रिडक्स टूल किट का यूज किया जाता है. कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रिडक्स ट्रेडिशनल का यूज करती है. Now many of them are using Redux toolkit only, so we will also use the Redux toolkit only for our implementations. Okay. या और एक क्वेश्चन, लाइक मिन स्टैक और फुल स्टैक में मतलब मिन स्टैक मतलब सिर्फ यूआई वाला है एंड फुल स्टैक मतलब विद बैकएंड? नहीं नहीं नहीं. जब वर्ड फुल स्टैक आता है तो आपको 5 चीजें पता होनी चाहिए एज अ फुल स्टैक डेवलपर. फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, फिर उसके बाद टेस्टिंग एंड आल्सो सिक्योरिटी. ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए. सिक्योरिटी में आता है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन. टेस्टिंग में आता है कोई भी एक टेस्टिंग टूल आपको पता होना चाहिए. हम देखने वाले हैं वो. इवन दो अगर आपके करिकुलम में है नहीं तो भी मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा टेस्टिंग टूल का. फिर आपको बैकएंड में डेटाबेस आना चाहिए. यू मस्ट नो अ डेटाबेस. और बैकएंड में आपको सर्वर आना चाहिए, सर्वर ऑपरेशंस. एंड देन यू मस्ट नो द फ्रंट एंड आल्सो. दैट इज कॉल्ड द फुल स्टैक डेवलपर. ओके, तो कोई भी फुल स्टैक डेवलपर हो, मन फुल स्टैक डेवलपर मतलब आप पर्पसली रिएक्ट वाले फुल स्टैक डेवलपर है. मीन फुल स्टैक मतलब क्या कि आप पर्पसली एंगुलर वाले फुल स्टैक डेवलपर है. और फुल स्टैक डेवलपर मतलब क्या, जिसे फ्रंट एंड का कोई फ्रेमवर्क आता नहीं. तो आपके पास एक एडवांटेज है दैट यू आर नॉट ओनली द फुल स्टैक डेवलपर, यू आर अ फ्रंट एंड फुल स्टैक डेवलपर, जिसको फ्रंट एंड का कोई एक फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी आ रही है और आपको बैक एंड की भी चीजें आ रही है. दैट इज व्हाट द फुल स्टैक मीन्स. तो फुल स्टैक में 5 चीजें इंपॉर्टेंट है. फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, टेस्टिंग टूल. ये नहीं, कोई भी एक टूल आना चाहिए आपको टेस्टिंग का. एंड देन the last one will be security, authentication और authorization. ये अगर आ गए तो आप फुल स्टैक डेवलपर. इनमें से अगर आपको मान लेते कि टेस्टिंग टूल नहीं आता है तो भी आपका सिलेक्शन होता है. ओके, ऑथराइजेशन का आपको कंसेप्ट भी अगर पता है तो भी चीजें हो जाती है. बट बैकएंड, फ्रंट एंड और डेटाबेस, ये 3 चीजें कंपलसरी है जो आपको आनी ही चाहिए to सो acquire a job. मिन स्टैक वालों को मतलब बैकएंड वगैरह वो मैंडेटरी नहीं है ऐसा, मतलब मीनिंग वो नहीं नहीं, अगर आप सिर्फ अगर रिएक्ट फ्रंट एंड, देखिए जॉब प्रोफाइल अलग अलग होती है. रिएक्ट फ्रंट एंड की जॉब प्रोफाइल होती है, रिएक्ट डेवलपर की जॉब प्रोफाइल होती है, मन स्टैक डेवलपर की जॉब प्रोफाइल होती है, नो एक्सप्रेस मन की स्टैक की जॉब प्रोफाइल होती है. तो प्रोफाइल अलग अलग होती है. अगर आप सिर्फ रिएक्ट के लिए जाते हो तो सिर्फ आप फ्रंट एंड के लिए जाओगे. ओके, इफ यू गो फॉर लाइक मन स्टैक तो हो सकता है कि आपको बैक एंड का भी काम हो. इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी. ओके, हर कंपनी के एनवायरमेंट पे वो डिपेंड होता है. लाइक मुझे जावा आता है, सो आई एम बैकएंड डेवलपर. अगर मैं रिएक्ट करूंगा तो आई एम फुल स्टैक डेवलपर नाउ, राइट? यू विल बी अ फुल स्टैक डेवलपर 100%. आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाओ. सो दैट इज द मेन कंसेप्ट. ओके, लेकिन जब हम मंथ की बात करते हैं तो उसमें पर्पसली नोड आता है.
मंच फुल स्टैक होना और फुल स्टैक डेवलपर होना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. I hope so now you are clear with it. Okay, fine guys. So on this note, I will stop the session for today. I hope so you guys have got a good information from today's session. And we will just stop the session for this part for today. Tomorrow we will have a session at the same time, that is 11:30. So let's see you guys in the next session. So till that time, be happy, be safe. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.